The first part of unit number 1, right? Unit number 1 में apart from this chapter 2, chapter 3, chapter 4, right? We have covered the entire 5 kingdom system of classification, right? All the 5 kingdoms we have done, एकदम properly discussed. ठीक है? तो अब ये चैप्टर प्लीज दिमाग में रखना कि ये चैप्टर इज अ प्रीकर्सर, ये चैप्टर पहले आता है, ठीक है ना? तो इसमें जितना भी डिस्कशन हुआ है मतलब वो अपने प्री हैंड ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है? तो ये चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? स्टार्टिंग व्हाट इज लाइफ वाला पार्ट, उसके बाद डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, उसके बाद टैक्सोनॉमी और फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, राइट? अपनी कोशिश है कि आज 11th स्टैंडर्ड का लास्ट डे है आपका, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दे, नहीं हुआ तो देखेंगे क्या करना है फिर अपना, ठीक है? Now, as I said, the first part of the chapter is discussing what is life and trying to find answers, right? बड़े बड़े ज्ञानी फिलोसोफर्स को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था, राइट? हम तो अभी भी छोटे बच्चे हैं उन लोग के सामने, राइट? तो हम लोग सिर्फ टेक्निकली डिफाइन करेंगे. वी विल नॉट ट्राई टू गो इनटू द फिलोसफी ऑफ व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट ना? अभी हाल फिलहाल अपना पर्पस एक ही है, गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई, बस, राइट ना? लाइफ डेथ का सवाल यही अपने सामने एक है बस, राइट? हाँ, तो अपने छोटे छोटे एम्स है, छोटे छोटे गोल्स है, वो उनको, राइट, द बिगर पर्पस ऑफ लाइफ में भी आगे जाके हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है? नाउ व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we conventionally look for characteristics exhibited by living organisms. See, some of them have been enumerated here, right? Growth is shown by living organisms, definitely. Reproduction is shown by living organisms. Ability to detect environment, right? Now, do we have the ability to detect what kind of an environment? Obviously, sense organs के through हम लोग detect कर सकते हैं, right? Right now मेरे रूम में भी एसी चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद मेरे को थोड़ा ठंडा लगेगा, डिफिकल्ट है ठंडा लगना ये वेदर के अंदर, बट है कि नहीं? अगर एसी अचानक से बंद हो जाएगा तो क्या मुझे मालूम पड़ेगा? हाँ, मालूम पड़ेगा, मुझे बंद हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. सो जब भी हम लोग एक एनवायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं तो वी गिव अ सुटेबल रिस्पॉन्स फॉर दैट. Metabolism is a feature which is shown only by living organisms. Ability to self-replicate, self-organize, interact, right? These are all characteristic of living organism. Now the purpose of this first part of discussion is 4 features we have to discuss of life. इतने सारे दिए, तो सिर्फ 4 features हमको डिस्कस करने हैं. हमको डिस्कस करना है ग्रोथ, हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? और हमको ये कंक्लूजन पे आना है कि आउट ऑफ दीज 4 विच इज थर्ड डिफाइनिंग फीचर, राइट? ग्रोथ इज अ फीचर, रिप्रोडक्शन इज अ फीचर, राइट ना? मेटाबॉलिज्म इज अ फीचर, कॉन्शियसनेस इज अ फीचर, लेकिन विच इज द फीचर जहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता है. तो ये 4 में से अपने को एक पे आना है, ठीक है? सी, अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइफ के डिस्कशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, right? Now it is always shades of gray, right? Not 50, but always shades of gray only. Okay, chalo. All living organisms grow. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth, right? Now, so जब सी ग्रोथ को डिपिक्ट करने के लिए अपने पास 2 चीजें होती है, हाइट और वेट. किसी भी चीज की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ये ग्रो कर गई है, राइट ना? यू मस्ट हैव मेट रिलेटिव आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. यू आर अराउंड अबाउट 15-16 नाउ, राइट? कोई रिलेटिव तुमको 5 साल 10 साल पहले देखा था, अभी सामने से आ जाएगा तो क्या बोलेगा आपको? एकदम इंस्टेंट रिएक्शन क्या रहेगा आपका? कितनी बड़ी हो गई बाबा, राइट ना? है कि नहीं? देखो तो मैंने गोद में खिलाया था, हाँ तो अंकल और एक बार ट्राई कर लो, चलेगा? ओके, तो नहीं बोला अभी तुम्हारा वजन बढ़ गया, अभी नहीं हो सकता बाबा, प्लीज. ओके, सो नाउ what is growth? Increase in mass, increase in height, increase in dimension.
A multicellular organism grows by cell division. Unicellular also grows by cell division. लेकिन डिफरेंस है, देखो यूनिसेलुलर के लिए सेल डिवीजन ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन मल्टी सेलुलर के लिए नहीं है ऐसा. Okay, in plants, growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. Plants have two types of tissues, meristematic and permanent. Meristematic हम लोग कैसे define करते हैं? Those who have property of cell division and growth is seen only in those areas where cell division occurs. तो मेरिस्टेमेटिक, जहां भी मेरिस्टेमेटिक रहेगा वो ग्रो करेगा ना, अपाइकल हो, इंटरकैलरी हो, लैटरल हो, वो ग्रो करेगा बिंदास. और जहां भी परमानेंट है वो डिफरेंशिएट होके परमानेंट हो जाएगा. वो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, ये सब परमानेंट टिश्यूज है. ओके, बट एनिमल्स में ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, राइट ना. वी ओनली फाइंड वी ग्रोथ ओनली, सो ग्रोथ प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट है, कंटिन्यूस होते ही रहेगा वो, लेकिन एनिमल्स में डिटर्मिनेट है. यूनिसेलुलर ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन. In majority of higher animals and plants, higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Growth alag, reproduction alag. Higher plants में, higher animals में. हाँ, देखो इसलिए ये चैप्टर थोड़े थोड़े एकदम बकवास हो जाते हैं. ये हायर को निकाल के लोअर डाल दिया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट. और हमारा फोकस कहाँ रहेगा? सर ने बोल्ड यहाँ पे किया था ना, हाँ, एक्सक्लूसिव मतलब ट्रू स्टेटमेंट, यस. ये लोअर मिस हो जाएगा फिर अपना, राइट. तो प्लीज ध्यान से पढ़ना चैप्टर ये. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. ओके फाइन, बॉडी मास बढ़ा तो ग्रोथ है, बट अगर ये क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दो तो वो भी ग्रोथ हो जाएगा फिर तो, राइट. माउंटेन के ऊपर और थोड़ा पार्ट डाल दो तो वो भी 1 इंच बढ़ जाएगा, राइट. सैंड ड्यून्स के शिफ्टिंग होते हैं डेजर्ट्स के अंदर, तो वो भी ग्रोथ हो जाएगा. अगर बॉडी मास का बढ़ना क्राइटेरिया है तो वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी होता है, राइट. तो पता चला कि ग्रोथ है तो फीचर लाइफ का, लेकिन जब उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये नॉन लिविंग वाला पॉइंट एक आ जाता है, ऑब्जेक्शन, राइट. तो ऑल्दो ग्रोथ इज अ फीचर लाइफ, हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक एक्सेप्शन आता है, एक ऑब्जेक्शन आ जाता है उसके अंदर. सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना. इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी. सिमिलरली रिप्रोडक्शन, characteristic of living organism, no doubt about that, absolutely no doubt about that, right. Multicellular organism, right. Organisms will reproduce by asexual means. Fungi already last lecture में देखा हमने, right. Asexual भी spore से करता है, sexual भी spore से करता है, right. In lower organisms like yeast and hydra we observe budding, right. yeast में budding होता है, hydra में budding होता है. Krisha, hydra belongs to which phyla? Sir, it belongs to Cnidaria. Cnidaria, Coelenterata. Coelenterata. In planaria, we observe regeneration, right? Na? Planaria में degree of regeneration is very high. बराबर ना? Anushka Gore? Yes, sir. You beta planaria belongs to which phyla, beta? Platyhelminth. Very good. Give me other examples of platyhelminthes, Anushka. Tapeworm, which would be Taenia. Fasciola, liver fluke, बेटा, है क्या नहीं, राइट. देखो आदत जो है ना वो जल्दी से जाती नहीं है, जहां भी रिवीजन का मौका मिला कर देने का, ठीक है. The fungi, filamentous algae, protonema of mosses all easily multiply by fragmentation, right. देखो चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज होगा कि ये चैप्टर हम लोग एंड में क्यों कर रहे हैं. अब have you studied the fungi? Yes, fungi are asexual is by fragmentation. Have you studied algae, filamentous, non-filamentous? Filamentous algae में एग्जाम्पल हमने किया है,
राइट, फिलामेंटस ब्रांच्ड है, फिलामेंटस अनब्रांच्ड है, याद रहेगा आपको डिस्कशन है कि नहीं। स्पाइरोगैरा यूलैथ्रिक्स जो है वो अनब्रांच्ड है, शारा जो है वो ब्रांच्ड है। हैव यू स्टडीड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस? यस, स्पोर डेवलप्स इनटू प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा टू, है कि नहीं, सेकेंडरी टू एंड सेकेंडरी टू लीफी स्टेज. So since we have done all this in the previous lectures, we understand this statement very easily now, right? वरना ये statement बहुत difficult होता है समझने के लिए अपने. Okay, when it comes to unicellular organisms like bacteria or unicellular algae or amoeba, right? अथर्व स्वामी जी, अथर्व स्वामी जी, ठीक है, आई कांट हियर यू. संस्कृति सिंह. Yes, sir. But amoeba belongs to which group of organisms? Kingdom? Plantae. Amoeba is kingdom Plantae. Good God. If amoeba is Plantae, then I am from Mars. So amoeba is protista. हाँ, Protista. Protista में कौन सा कैटेगरी? प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ऐसे कैसे प्लांटे बोल दिया आपने बेटा? Sir, I saw algae. अमीबा, ठीक है. But we have some examples here. Mules, right? Mule is a hybrid. Donkey horse का जो हाइब्रिड होता है उसको म्यूल बोलते हैं. और हाइब्रिड्स हमेशा स्टेराइल होते हैं. हाइब्रिड्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. स्टेराइल वर्कर बीज, राइट. हनी बी पढ़ा हम लोग ने. हनी बी 3 टाइप के होते हैं, क्वीन बी, मेल ड्रोन और फीमेल वर्कर. रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बिटवीन queen and male. There is no reproduction for female worker bee, so they are sterile, they cannot reproduce, right? A lot of humans also are not able to reproduce, they are infertile. So reproduction is a characteristic of living organism, but definitely we have some examples where reproduction does not occur. आगे ऑब्जेक्शन देखो वापस है ना, एक एक्सेप्शन आ गया ना अपने आप पे. So that's why we cannot say it's an all-inclusive defining feature, right? ना कि एकदम हमेशा constant रहने वाला feature नहीं हो सकता है, ठीक है. That does not mean that non-living object is capable of reproducing. ऐसा non-livings cannot reproduce. So reproduction is a feature of life, but it is not a defining feature of life, because we have certain examples which are still not capable of reproduction. Third point is metabolism, right? Now metabolism, obviously इतना सारा आप लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, राइट. यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, इतने सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए. सो लास्ट टाइम हमने वायरसेस के टाइम पे वी हैड डिस्कस्ड वन टर्म कॉल्ड एज मेटाबॉलिक मशीनरी. वायरसेस के पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, उन लोगों के पास है क्या नहीं. सो ऑब्वियसली metabolism is a feature which is found a characteristic feature of life. All organisms are made up of chemicals, small, big. पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना. Constantly being made or changed into some other biomolecules. याद है बायोमोलिक्यूल्स में एक टर्म किया था हमने, फ्लक्स करके, है कि नहीं. A is converted to B, B is to C, C is to D. हमेशा कुछ ना कुछ चेंज, कुछ भी स्टैटिक, सब डायनामिक है. So all plants, all animals, fungi, microbes, they exhibit metabolism. Thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. Unicellular हो, multicellular, right? कहीं ना कुछ metabolism चल रहा है. No non-living object exhibit metabolism. Non-living objects में metabolism होगा ही नहीं. लेकिन let's say, for example, we take one simple metabolic reaction, carbon dioxide plus water gives carbonic acid. पढ़ा है ह्यूमन रेस्पिरेशन में, हो गया ना मिश्री? Yes, sir. हाँ, राइट ना मिश्री. द मोमेंट यू ट्राई टू सिट आराम से, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, ओके. हाँ, राइट ना.
Yes, Mishri, पढ़ा है human respiration में ना, CO2 plus H2O gives H2CO3. Yes. And in the presence of? Carbonic anhydrase. Very good, excellent, right? Na? But can this reaction, Mishri, occur in absence of carbonic anhydrase also? Yes, but very slow. Very slow, excellent. पूरा discussion याद है अपना, है क्या नहीं? हाँ, but क्या अगर मैं इसी रिएक्शन को सेल के बाहर करता हूं, लाइक आई टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द लैब, आई टेक वाटर एंड आई ट्राई टू मिक्स बोथ ऑफ देम, विल कार्बोनिक एसिड बी फॉर्म? यस, इट इज केमिकल रिएक्शन, इजंट इट? इट इज केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं? तो दैट मीन्स अ मेटाबॉलिक रिएक्शन which is taking place inside the cell, the same reaction is capable of taking place outside the cell system also. But inside the cell, it will be a part of life. But outside the cell, it will not be a part. It's a non-living reaction. So can I term metabolism as an exclusive feature of life? No. No. Are you trying to understand the discussion now? Okay, these are all characteristics of life. But you can't place a exclusive character, defining character. Right? So what are the first point we discussed? Growth. Growth के बाद reproduction. Reproduction के बाद metabolism. Metabolism के बाद consciousness. Consciousness. Right? The ability to detect our surrounding and respond to stimulus. Right? We receive stimuli from all our surroundings, right? Physical stimulus, or chemical stimulus, or biological stimulus, or right? Yes, Sakshi, do we receive stimulus from environment, Sakshi? Yes. Right now, because see, right now, मेरे रूम का दरवाजा खुला है and किचन में कुछ बन रहा है, तो stimulus तो आ ही रहा है वहां से. Okay, so I know what is cooking now, so I want to finish the lecture fast now, right? So that is my response. बराबर के? Just giving example, please. Okay. Do we have physical stimulus? Yes, heat, cold is physical stimulus, touch pressure is physical stimulus. All these are stimuli. So are we able to sense the stimuli? Yes. Are we able to respond to this stimuli? Yes. So this ability of us is nothing but consciousness, right? We respond or we sense our environment through our sense organs, right? We are blessed with sense organs. Plants respond to external features like light, water, temperature, other organism, pollutants. Remember I told you lichen, it is sensitive to pollution. बताया कि नहीं? Sulfur dioxide बढ़ जाएगा तो it will fall off. All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes, without any exception, can sense and respond to environment. Photoperiod. Right now, ये photo period. Photoperiodism is a topic which we will learn in plant growth. Right? The amount of daylight. Right? See, right now, light ka only one relation you know with plants, and that is photosynthesis. Right? Light is required. But light is also required for flowering. Right? The amount of sunlight, the period of sunlight which is required for flowering. Right? Some plants require a longer sunlight period. उसको हम लोग long day plants बोलते हैं. Some are short day plants, some are day neutral plants. ये plant growth में आएगा. Right? The same photo period will affect reproduction in seasonal breeders also. Both plants and animals. So photo period is the duration of sunlight. Please. The duration for which sunlight is available is called as photo period. All organisms handles chemicals entering their bodies. All organisms are therefore aware of their surrounding, right? Human being is the only organism is aware of himself, self-consciousness. So consciousness becomes a defining property of living organism. The ability to sense and respond to the stimulus. Consciousness becomes the defining property of living organism. So how many properties did we do? 4. Growth, reproduction, metabolism, and consciousness. सारे के सारे प्रॉपर्टीज है लाइफ के 100%. दे आर प्रॉपर्टीज. लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्शियसनेस. राइट? आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज वेरी क्लियर. हाँ, ओके. देखो सी, अभी भी मैंने बोला ना कि देखो, व्हेन यू डिस्कस
लाइफ एंड इट्स फीचर्स ना काफी सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं, काफी सारे ग्रे एरियाज आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, राइट, ह्यूमन बींग्स में इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, राइट, पीपल आर ऑन लाइफ सपोर्ट मशीन्स, राइट, वेंटिलेटर्स पे होते हैं कि नहीं, वेंटिलेटर निकाल दो तो वो मर जाएंगे, तुम्हारा लंग्स का रेस्पिरेशन, हार्ट लंग मशीन पूरा वेंटिलेटर पे चल रहा है तुम्हारा, वेंटिलेटर स्टॉप कर दो तो दे आर डेड। सो सच अ पर्सन कैन बी डिफाइंड एज लिविंग और डेड, यू डोंट नो, कॉन्शियसनेस तो नहीं है। कैन अ पर्सन हु इज ऑन वेंटिलेटर रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस? नो। अ पर्सन हु इज इन कोमा, राइट ना, लिविंग नॉन लिविंग, तो अभी भी थोड़ा ग्रे एरिया है उसमें, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिस इज वन डिफाइनिंग फीचर, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, सो these four properties are the first part of your chapter. Are we clear about these four properties, please? Yes. The second part of the chapter is diversity, right? Diversity in the living world. When you talk of diversity, you know what is diverse? Diverse is differences, na? Diverse ka matlab hota different. So what are the different kinds of living organisms? Every different kind of plant, animal, organism that you see represents a species, right now. What is the total human population of this earth? Roughly around 700 to 800 crores. Roughly around 700 to 800 crores, 7 to 8 billion, right? But all these human beings represent only one species, Homo sapiens. Collectively, we are only one species, huh? खाली ये एक स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है ना। ऐसे according to IUCN, this is the body which is responsible for keeping the data, total number of species कितने हैं, right? I'll tell you the full form also इसका. The total number of species is 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 million, मतलब समझ रहे हैं, 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज, 17 lakh to 18 lakh species. Human being is only one species, please. राइट, ये एक बहुत ही अभी तक डिस्कवर हुए हैं, राइट ना, एंड साइंटिस्ट्स आर एस्टिमेटिंग दैट देयर आर रफली अराउंड 7 to 8 million स्पीशीज टोटल इन दिस वर्ल्ड, अर्थ पे, आउट ऑफ विच सिर्फ इतने डिस्कवर हुए हैं, यानी रफली अराउंड 20-22% डिस्कवर हुए हैं और 80% डिस्कवर होने बाकी है. So can you imagine the type of diversity, types of organisms which are available? This is called biodiversity. We have an entire chapter on biodiversity ecology के अंदर, last unit number 10, I believe chapter number 15 है, ठीक है. IUCN, right ना, अगर mention नहीं है कहीं पर भी तो ये लिख लो, IUCN. IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. लिखा? ओके. नाउ इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, राइट, डिस्कवर्ड कितने हैं? 1.7 to 1.8 million डिस्कवर्ड. So don't we need to know the names of these organisms? So we should have a standardized formula, standardized set of rules for naming the organism, so they are known by the same name across the world. So there is no confusion when there is description. Right now, how you have क्या बोलते हैं उसको, क्या, I forgot. IUPAC, IUPAC. Do you have IUPAC? Always nomenclature is according to IUPAC, right? International Union for Pure and Applied Chemistry. Am I right? क्या बात है, वेरी गुड, राइट ना. इतना तो केमिस्ट्री आता है, ठीक है ना, इतना ही केमिस्ट्री आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है.
ओके, ठीक है. अब the process by which you give a name to an organism is called as nomenclature. Right? Nomenclature is possible only when the organism is described correctly, identified, right? So identification होगा तो nomenclature हो सकता है. ठीक है, अभी nomenclature अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग जो है, इट इज फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस. देखो आपके सामने है व्हाट आर द डिफरेंट दिस थिंग फॉर, उसमें से शायद प्लांट्स और एनिमल्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, चेक कर लो प्लीज. बैक्टीरिया, वायरसेस मेंशन नहीं है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट. ठीक है, क्लियर प्लीज. सो साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज ओनली वन नेम, राइट? वरना गड़बड़ हो जाएगी. हम लोग हर एक organism को in different parts of the world you will have a local name, so it will be very difficult for एक platform पे इसको discuss करना. So scientific name has to be common. Local vernacular name कुछ भी हो सकता है, right? I can call it as आम or amba or whatever I can, but mangifera indica standard रहेगा world. If I say mangifera indica, every science student will understand that we are describing the mango. ठीक है ना? Okay, so it is Solanum tuberosum, it is potato. Okay, so scientific name has to be one. So uska jo method hai, how to come to it, that is called as binomial nomenclature. That is called as binomial nomenclature, right? So every scientific name has two parts. The word binomial itself is indicating that it has two parts, right? The generic name and the specific epithet. The generic name is the genus, and the specific epithet is the species. So when you say Mangifera indica, Mangifera is the genus and indica is the species. This naming system was introduced by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, right? We can just go to the NCERT. I hope you have NCERT beside you. ये देखो क्या है, Carolus Linnaeus दिया है यहाँ पे. Okay, so let us take example of mango to understand. देखो मैं NCERT से पढ़ रहा हूँ. Scientific name of mango is written as Mangifera indica. In this name, Mangifera represents the genus while indica represents the species or a specific epithet. Now, biological names are generally in Latin, right? Na? Ficus bengalensis, right? Na? Like any Panthera leo. So they are Latin. The reason being that ये पूरा system जब devise हुआ ना, तब Latin was the major language spoken in the world. Today it is English. That time Latin was the most major language. इसलिए ये पूरा system Latin में devise हुआ. And written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in the biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. जहां भी specific epithet आता है ना, bracket में species लिखते जाओ. So you will understand that specific epithet का मतलब species का नाम. Yes, जिया बेटा बोलो. So what is epithet? Denoting. Epithet is when you denote it. Okay. Both the words in biological name, ये important है, देखो please. When handwritten, are separately underlined. Now this is a nomenclature का rule, please. इसको y नहीं आएगा, please. Don't ask me why. Okay. So when you are writing the name by hand, इसको मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन कर लेंगे, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे, बट उसको जब प्रिंट करेंगे तो आइटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, राइट ना? सो कैन यू सी मैंगीफेरा इंडिका प्रिंटेड हियर इज इन आइटैलिक्स?
ठीक है ना. सो वेर एवर द साइंटिफिक नेम अपियर्स इन द सिलेबस, द साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज इन आइटलिक्स. कॉमन नेम के लिए नहीं है. तो प्रिस्टिस सॉफिश होता है, तो प्रिस्टिस आपको लिखा रहेगा आइटलिक्स में, ब्रैकेट में सॉफिश नॉर्मल फॉन्ट में लिखा रहेगा. ठीक है. ओके. चौथा, द जीनस इज starting with a capital letter M, Mangifera, and species starts with a small letter always, right? So let's say for example Mangifera indica, मैं 4 तरीके से आपको लिख के 4 ऑप्शंस में डाल के दे दूंगा. by which is correctly written, you please identify. समझ में आ रहा है ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू कैन गेट. ओके. नाउ ये 4 तो स्टैंडर्ड रूल्स एकदम binomial nomenclature के, right? Now, who was the person who did all this? Carolus Linnaeus, right? अब उसने उसकी पूरी जिंदगी binomial nomenclature को दान कर दी. He gave name to around 10,000 organisms. मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के वो हिसाब से उसने नाम दिए 10,000, right? Then इतना सारा काम करने के बाद वो anybody will feel ना मेरा नाम याद रहना चाहिए, तो उसने बोले एक 5वां रूल ऐड करते. स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो है ना, जिसने भी इसको डिस्क्राइब किया ना, उसका नाम आना चाहिए, राइट? सो मैंगेफेरा इंडिका, ये देखो लिन, राइट ना? मैंगेफेरा इंडिका लिन. लिन का मतलब क्या होता है एब्रिविएटेड फॉर्म में? लिनेयस, राइट? तो अगर ये होगा तो फिर बेचारे लिनेयस भाई अमर हो जाएंगे. Every time I eat a mango, I have to remember Mangifera indica Lin. है कि नहीं? सीजन चल रहा है वैसे भी आम का, राइट? पता है तुमको कि whenever you write an article, right ना, you always take references of books, right ना? कभी विकिपीडिया पर आर्टिकल पढ़ा रहेगा आपने. विकिपीडिया में आर्टिकल के नीचे हमेशा रेफरेंसेस दिए होते हैं, राइट? जनरली हम लोग बुक्स को रेफर करते हैं ना, तो वो पार्ट को हम लोग बिब्लियोग्राफी बोलते हैं. इफ यू हर्ड ऑफ द टर्म बिब्लियोग्राफी, राइट? और किसी ऑथर को कोट करते हैं ना, उसको हम लोग साइटेशन बोलते हैं. द ऑथर इज साइटेड, CITED. तो इस ये जो 5वां वाला पॉइंट है ना, इसको साइटेशन बोलते हैं. उसको साइटेशन बोलते हैं. व्हेन यू यूज द नेम ऑफ द ऑथर एट द एंड, इट्स कॉल्ड साइटेशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सिलेबस के अंदर जो है ना, बाइनोमियल ही फॉलोड है, राइट ना? लिन को नहीं अपनाया आप लोगों ने अभी तक. ठीक है ना? Are we clear with this, please? So all the places you will find that either the description is through genera or genera species, binomially followed, right? Lin, ये यहीं पे एक ही एग्जाम्पल है जहां पर ये ट्राइनोमियल आ गया है. ओके. समझ में आया? ये 5 रूल समझ में आया प्लीज सबको? ऑल ऑफ देम. ठीक है. अच्छा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं बता रहा हूं. उसमें एग्जाम्पल्स क्या हो गया पता है क्या? ओके. मैंगीफेरा इंडिका, राइट? मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो. मैंगो, राइट? देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज अजाडिरेक्टा इंडिका. अजाडिरेक्टा इंडिका, राइट? अजाडिरेक्टा इंडिका किसको बोलते हैं हम लोग? नीम के प्लांट को. द नीम का पेड़ होता है नीम, उसको अजाडिरेक्टा इंडिका बोलते हैं. अब मुझे बताओ यहां पर रिपीट क्या हो रहा है? जीनस या स्पीशीज? स्पीशीज रिपीट हो रहा है, राइट ना? हाँ, इसका मतलब अलग अलग जेनेरा में स्पीशीज का नाम रिपीट हो सकता है. स्पीशीज का नाम रिपीट हो सकता है, राइट? और एक भी बताता हूं मैं. हाउस कैट, जो नॉर्मल घर में बिल्ली पालते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका, राइट? घर में पालतू है इसलिए डोमेस्टिका उसका स्पीशीज नेम है, फेलिस डोमेस्टिका, राइट? बट देयर इज वन मोर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज म्यूस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, मक्खी. द वर्ड हाउस फ्लाई है ना, तो म्यूस्का डोमेस्टिका. सो इज द स्पीशीज being repeated in different genera?
यस, राइट ना। तो अलग अलग जेनेरा में आप स्पीशीज का नाम रिपीट कर सकते हैं, उसी जेनेरा में स्पीशीज का नाम रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर म्यूस्का डोमेस्टिका या मैंगेफेरा जेनेरा में आपने इंडिका यूज कर लिया है, तो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को आप मैंगेफेरा इंडिका नहीं बोल सकते। ठीक है, ये भी एक रूल है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, राइट, कि द नेम ऑफ द स्पीशीज कैन रिपीट इटसेल्फ इन अनदर जेनेरा। द नेम ऑफ द स्पीशीज कैन रिपीट, राइट, उसी जेनेरा में रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, सम एग्जांपल्स फॉर यू, राइट, यू कैन रेफर दिस। देखो ये पूरा आ गया। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, मैंगेफेरा अर्बेंस जीनस इज जेनेरिक नेम, स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपके लिए लेके आया मैं, यू कैन फॉलो इट इजीली। सम एग्जांपल्स आई हैव गॉट फॉर यू ऑल। ह्यूमन इज होमो सेपियंस, यू नो दैट। लायन इज पैंथेरा लियो, पहले आके गया अपने को मैमल्स में। डॉग इज कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस, राइट। ऑनियन इज एलियम सेपा, ये तो बहुत पुराना है अपना, राइट। संस्कृति सिंह, Yes, sir. ये अनियन जो है बेटा, मुझे दो चीज बताओ इसके बारे में। सबसे पहले ये कौन से फैमिली का है? मैंने पहले ही बोला था, रिवीजन का चांस छोड़ता नहीं मैं कभी। ऋत्वी सिंह, ऋत्वी शाह, आई एम सॉरी, सिंह क्या बोला, ऋत्वी शाह। फैमिली Solanaceae. सोलानसी, राइट ना। कूट कूट के मारना चाहिए तुम लोग को। Sorry, लिलियसी, लिलियसी का डायग्राम इज ऑफ अनियन, लिलियसी का डायग्राम इज ऑफ अनियन। और दूसरा क्वेश्चन, इसका डिप्लॉयड नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर पढ़ा है सेल डिवीजन में, 16. वो 16, वो ब्रैकेट आया था, पैराग्राफ आया था ऑरेंज वाला, याद है कि नहीं? 2C 4C वाला, राइट। हाँ, तो देखो ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है अपने को। यानी आके गया पहले अपने को ये। वीट इज कॉल्ड ट्राइटिकम एस्टिवम, ये आपके सिलेबस में है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिंजल इज सोलैनम मेलोंगोना, ये पढ़ चुके हैं सोलैनेसी में हम लोग। रोज इज रोजा इंडिका, ये देखो इंडिका वापस आ गया, द कॉमन इंडियन रोज, राइट, रोजा इंडिका, राइट। तो भी 3 एग्जाम्पल हो गए इंडिका, मैंगेफेरा इंडिका, वाह, राइट, एजाडिरेक्टा इंडिका एंड रोजा इंडिका, क्या बात है। पिजन इज कॉल्ड कोलंबा लिविया, कोलंबा पढ़ा है हमने, क्लास एज में पढ़ा है ना कोलंबा, राइट, एंड इट इज कोलंबा लिविया। ठीक है, सो सम एग्जांपल्स फॉर यू टू गेट फेमिलियर विद बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर प्लीज एवरीबॉडी? नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 लाख से 18 लाख, impossible to study all the living organisms together. Absolutely, you are humanly impossible that इतने सारे organism को study करें. But how to do it? It is possible through classification, right? Now, when you classify, right, when you classify, you use certain criteria. कि कुछ कॉमन टर्म्स है भाई, एक ग्रुप है जिसके पास ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोगों ने एक साथ ग्रुप में रख दिया, राइट। डिड यू स्टडी समथिंग लाइक, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट ना। व्हाई आर्थ्रोपोडा? सर जॉइंटेड फीट सर, राइट ना। तो कहीं भी मुझे जॉइंटेड फीट दिखा सर, कुछ नहीं तो ये आर्थ्रोपोडा है, मालूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम एक साथ डिस्कस करते हैं उसको, राइट। हम लोग ग्रुप डिस्कस, हम इंडिविजुअल डिस्कस, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टडी व्हेन यू टेक अप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फॉर स्टडी, राइट। हम लोग हमारे लेवल बात कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उसको क्लासिफिकेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स, राइट ना। इस प्लांट अ पर्टिकुलर ग्रुप, हाँ, जो ग्रीन है, जो नॉन मोटाइल है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ, ये प्लांट्स है,
एनिमल्स ग्रुप है, डॉग्स ग्रुप है, कैट एक ग्रुप है, इंसेक्ट एक ग्रुप है, isn't that? So we are dividing this into groups. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group, right? इसलिए हम लोग जब भी एक ग्रुप पढ़ते हैं ना, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव फीचर पढ़ते हैं उसका। हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा, लेकिन हम लोग जब भी आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, क्या हमको कॉकरोच कहीं में जाता है? आता है कि नहीं आता है? राइट? Isn't it? So we always associate, क्योंकि वो एक उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है, राइट? कुछ भी कर लो, एनालिटा जब भी यूज करें, हाँ अर्थो एनालिटा, अर्थो एनालिटा, यस। इक्वाइनोडर्मेटा स्टारफिश, एकदम राइट ना? सो वी एसोसिएट विद दैट ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। ओके, what image do you see when you think of a dog? Obviously, each and every single dogs are not cats. You start thinking about all kinds of dogs, right? Now, you have seen so many types of dogs, right? Now, if you were to think of Alsatians dogs, then now image change हो जाएगा पूरा अपना। अगर सिर्फ डॉग बोलेंगे हम लोग, भाई नॉर्मल जो रास्ते पे जो डॉग आता है एकदम गंदा वाला, वो भी डॉग है, राइट? बिल्डिंग में पोमेरियन कुत्ता है, वो भी डॉग है कि नहीं? जर्मन शेपर्ड है, वो भी डॉग है, अल्सेशियन है, वो भी डॉग है कि नहीं? लेकिन जब डॉग यूज करते हो तो सब इमेज में अपने, हाँ डॉग मतलब नॉर्मल डॉग, बट इससे पोमेरियंस, क्यूट वाला, छोटा छोटा एकदम सा, राइट ना? फिर एक वो अपना वो कौन सा वो वोडाफोन वाला डॉग, छोटा वाला है ना एकदम, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, पग, कुछ तो बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट एज, इट कॉल्ड एज पग्स, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, राइट? एकदम क्यूट वाला, राइट? ओके, सिमिलरली कैट्स, राइट ना? कैट्स के भी कितने टाइप्स होते हैं, ओके? Similarly, when you say mammals, you think all animals with external ears and body hairs. Pinna है mammals, याद है ना? Only class to have pinna. बाकी सब में pinna absent है. Okay. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture will be of wheat plants, not of rice. Right? So ये dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animal, they are all convenient categories we use to study organisms. इसको category बोलते हैं हम लोग. So scientific terms for these categories taxa. The scientific term for this category is taxa. देखो कहां से ये taxonomy word आया अभी? So plants, they form a taxa. So when I say kingdom plantae, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग तो, kingdom plantae. तो kingdom जो है ना, वो कैटेगरी है, लेकिन इस कैटेगरी को डिस्क्राइब से कर रहे हैं थ्रू अ टैक्सा, plants. So plant is a taxon group, और उसको डिफाइन क्या कर रहा है? एक रैंक, राइट? सी say for example armed forces, do we have hierarchy in armed forces? Right na? When you join, you are a cadet, right? Maybe you become a lieutenant or a colonel or a major or a general, बनते हैं ना ये? तो ये सारे रैंक्स होते हैं सामने, लेकिन आदमी चेंज होते जाता है, right? When I want to refer to an army person, I always have to refer him through his rank. Lieutenant Colonel so and so, Major so and so, General so and so, है कि नहीं? तो वैसे ही if I have to refer to an organism, हाँ किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंगाई, है कि नहीं? तो किंगडम कांस्टेंट रहता है, उसका रैंक, उसका क्लासिफिकेशन। तो ये जो किंगडम है, हम लोग ने 7 कैटेगरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको अभी बराबर से आती है वो सातों कैटेगरीज, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बराबर ना? ये एनिमलिया से स्टार्ट किया है मैंने ये 7 कैटेगरी पढ़ाना। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट प्लीज, पक्का? ओके, ठीक है ना? सो ये जो सातों है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रैंक, क्लासिफिकेशन, दिस इज कैटेगरी, इसको कैटेगरी बोलते हैं हम। उसके सामने
let's say if I say phylum chordata, phylum echinodermata, phylum let's say arthropoda, तो ये जो है ना वो होता है टैक्सा, एक ग्रुप, ठीक है। सो वीट इज अ टैक्सा। अब वीट का नाम पढ़ा हमने अभी, देखो यहाँ पे क्या था, वीट का नाम ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम उसका जेनेरा है, तो जब मैं ट्राइटिकम बोलता हूं तो क्या है, जीनस ट्राइटिकम, ट्राइटिकम इज जेनेरा ना, तो जीनस ट्राइटिकम। तो इज दैट इंक्लूडिंग ऑल द वीट रिलेटेड प्लांट्स नाउ? तो जीनस क्या हो गया, उसकी कैटेगरी हो गई, ट्राइटिकम क्या हो गया, उसका टैक्सा हो गया वो, राइट। सो एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया, मैमल्स, क्लास मेमेलिया, डॉग्स, राइट ना, जेनेरा कैनिस, हम पढ़ा कैनिस फेमिलियरिस पढ़ा, डॉग, ये देखो, गेटिंग इट नाउ। सो एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर मैमल, मैमल के अंदर डॉग, राइट ना, ऑल आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। हम लोग एक कुत्ते के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट लेकिन जब मैं बोलता हूं ये एक एनिमल है तो मेरा टैक्सा अलग हो गया, ये एक मैमल है तो उसका टैक्सा अलग हो गया, अच्छा ये डॉग है तो उसका टैक्सा अलग हो गया अभी। सो ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल्स, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल्स। बात उसकी कर रहे हैं हम लोग। So based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. Understood the word taxa, please everybody? समझ में आया taxa क्या होता है, right? ना more when you start solving MCQs ना based on this, right? Hopefully in the future after the vacation, right? तो that time थोड़ा सा अपने को clarification भी आएगा, थोड़े doubts आएंगे उसमें और समझ में आएगा अपने को, okay? So this process of classification is nothing but taxonomy. राइट, अब क्राइटेरिया क्या क्या यूज कर सकते हैं, यस ऋत्वी? So taxa is like a common name like for categories. कैटेगरी इज अ रैंक, कैटेगरी इज अ रैंक। यू आर ऑन म्यूट ऋत्वी, आई कांट अंडरस्टैंड। So it's like categories ka, this is known, the division is known as taxa. टैक्सा, हाँ, द पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सा, ओके। So external and internal structure, structure of cell development, ecological information of organisms, they all form the basis of modern taxonomic studies. So characterization, identification, nomenclature, classification, they are processes that are included in taxonomy. ठीक है, अब rather than just knowing about different kinds of organisms, their types, we are also taking this study to another level, right? दो organism है मेरे पास, right? X और Y. X को भी मैंने क्लासिफाई किया, Y को भी क्लासिफाई किया, राइट? अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के लाइन में एक्स और वाई रिलेटेड है क्या, कोई सेम ट्री में, कोई सेम क्लासिफिकेशन में आते हैं क्या, एक्स और वाई में कुछ रिलेशनशिप है क्या? तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डिराइव देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो अब इस स्टडी में मैं फाइलोजेनी को ऐड कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही रहा था मैं, अब इसमें मैं फाइलोजेनी को ऐड कर रहा हूं। तो जब मैं फाइलोजेनी को ऐड करता हूं तो उसको मैं सिस्टमैटिक्स बोलता हूं, राइट? सी इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, फॉर प्रैक्टिकल यूजेज, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी आर टर्म्स यूज्ड सिनोनिमसली, राइट? लेकिन अगर थोड़ा सा बारीक में जाए ना, थोड़ा सा डीप में जाए ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है कि सिस्टमैटिक्स पूरा क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके अंदर रिलेशनशिप ऐड कर देंगे ना, वो तुम्हारा, सॉरी, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, सॉरी, लेकिन उसके अंदर रिलेशनशिप ऐड कर देंगे, वो सिस्टमैटिक्स बन जाएगा, राइट? सो बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स थोड़ा हायर लेवल पे आता है, राइट?
तो यहां पर अपना सेकेंड पार्ट खत्म होता है, राइट। जस्ट चेक थ्रू एनसीईआरटी, अपन सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है अपना, प्लीज। यस। सिस्टमैटिक्स, राइट। लिनियस यूज सिस्टमा नेचरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, जिसमें उसने पूरा डिस्क्राइब किया था, सिस्टमा नेचरे, राइट। Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. ठीक है, clear please? Okay. Now coming to the third part. Yes, Jia? So numerical and all that cytotaxonomy is under systematics. Yeah. Everything comes under. Okay. Now, the third part, right, is the most difficult part of this chapter, right? You'll have to pay a little attention here, please, right? थर्ड पार्ट के बाद मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा, राइट। फोर्थ पार्ट जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, आप पढ़ के आएंगे, मैं डाउट्स लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो आई नो कि थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा ये चैप्टर, चलेगा, बट आई एम रेडी फॉर दैट, राइट। बट ये थर्ड पार्ट प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, प्लीज, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and questions are more concentrated from this part of the chapter. And the discussion we've been having in the last 15-20 minutes, half an hour, is for this particular part. What are the different taxonomic categories, right? As I said, कि categories हमको 7 आती ही आती, definitely. Kingdom से लेके, तुमको you can see kingdom से लेके species तक, right? Now this diagram is very much self-explanatory. Can you see kingdom? Although सबसे हायर लेवल पे नीचे लिखा नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये पिरामिड के फॉर्म में बनाया हुआ है। कैन यू सी किंगडम इज ह्यूज ना, किंगडम बड़ा है, बट उसके अंदर फाइलम अ स्मॉलर लेवल, क्लास स्टिल अ स्मॉलर लेवल, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो व्हेन आई से पैंथेरा लियो, लायन, राइट ना, इट इज वन स्पीशीज आउट ऑफ दिस एंटायर किंगडम. So kingdom is a very bigger level of classification, more general level of classification. Species is the most smallest unit of classification. So in this particular part, right, the third part, we have to talk about each one of these 7 categories: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, right? Please stay with me. Please be very attentive in this part, please. Okay. Classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category, right? इसको हम लोग taxonomic hierarchy या taxonomic category classification बोलते हैं. See, hierarchy, you have heard of the word hierarchy before, right? Now hierarchy is level, है कि नहीं? Do we have hierarchy in school? Yes. The smallest level of hierarchy is peon. The highest level of hierarchy is principal. है कि नहीं? प्रिंसिपल, प्यून टू प्रिंसिपल, हायरार्की अपनी P2P है, राइट? तो स्कूल में करप्शन कैसा है? P2P सर, प्यून टू प्रिंसिपल, सब पैसे खाते हैं. ओके, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, the main aim of taxonomic study is to assign each organism an appropriate place in a systematic framework of classification. I'm sorry. And this is done by scientific grouping in descending order of their ranks, right? मैंने क्या बोला, देखो पूरे क्लासिफिकेशन में 2 मेन टर्म्स है, टैक्सन और कैटेगरी. कैटेगरी इज रैंक और लेवल. सो कैटेगरी की जो हायरार्की है, उसमें सबसे बड़ी वाली कैटेगरी कौन सा है? किंगडम. और सबसे छोटी वाली कौन है? स्पीशीज, राइट? टैक्सन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई टोल्ड यू ना, एनिमल टैक्सा, एनिमल के अंदर मैमल टैक्सा, मैमल के अंदर डॉग टैक्सा, राइट ना? सो व्हेन आई से किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम क्या हो गई? कैटेगरी. एनिमल्स क्या हो गए? टैक्सा.
So when I say Panthera Leo, Panthera क्या हो गया? Category. नहीं. Category is genus. Panthera is taxa. Category हो गई genus. Panthera Leo में what is Panthera? It is genus ना? जो बोलता हूं हाँ हाँ करते आते तुम लोग. Yes, Namya? So I didn't understand what you were saying. When I say kingdom animalia, Yes. what is kingdom, Namya? Category, and then your Highest category, right? Huh. Na? And what are animals? Animals is a group of living organisms, so animal becomes taxa. Correct. But when I say Panthera Leo, Huh. so is Panthera the genus? Yes. So genus becomes the Oh. Acha, huh. category. Huh. So the category is genus, but the taxa is Panthera. So is Panthera a group of living organism? Yes. Panthera Leo, Panthera pardus, Panthera tigris, lion, leopard, tiger. It's a group of organism. So your genus becomes a category. The category. And the taxa, Panthera becomes the taxa. Understood. So when I say lion, Huh. I say Panthera Leo. Huh. So what is Leo? Leo is your taxon. Your species becomes a Exactly. category. Species becomes the category. Yes. Got that, Namya? No? Yes. Yes. Got it. समझ में आ रहा है सबको? I'll give you an example. ये देखो. Two examples I brought for you. One is hibiscus rosa sinensis. You know China rose? पढ़ा है ना? China rose. And one is cobra. Okay. अब देखो kingdom plantae. Category is kingdom, taxon is plantae. Is this a group of plants? Yes. Right? Division or phylum. I told you phylum is used in case of animals. Division is always used in case of plants. So division angiospermae. Class Dicotyledonnae. Subclass Polypetalae. Series Thalamiflorae. Order Malvaceae. Family Malvaceae. Genus Hibiscus. Species is Rosa sinensis. बराबर ना? When I say that I am describing a plant of China rose, right? Am I being very specific in my discussion? अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं तुमको. भाई हम लोग एक प्लांट डिस्कस कर रहे हैं. तो तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ किंगडम प्लांटे. ओके. सो आपने बाकी 4 किंगडम रूल आउट कर दिए. सो यू हैव कम टू किंगडम प्लांटे. अच्छा अपना प्लांट जो है ना, इट्स एन एंजियोस्पर्मा. ओ अच्छा नो थैलोफाइटा, नो ब्रायोफाइटा, नो टेरिडोफाइटा. अच्छा ये सब रूल आउट हो गया. इट इज अ स्पर्मेटोफाइटा. उसमें इट्स एन एंजियोस्पर्म. ओके ग्रेट. अच्छा एंजियोस्पर्म में ना इट इज डाइकॉट. मोनोकॉट चले गए फिर अभी सब बाहर, राइट? अच्छा उसके अंदर ना इन द डाइकॉट ना इट इज हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑर्डर मालवेज, फिर मालवेसी. सो एज आई कम डाउन द ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, am I starting to become more specific now? Right? You start increasing your specificity. When I go from species up to kingdom, my discussion becomes more general. Discussion becomes more general in nature, right? So always kingdom to species, specificity increases. Ulta, specificity decreases. I'll give you one more example. ये देखो. Let's say I want to describe rose. Moss rose is Rosa gallica. Does it belong to kingdom plantae? Yes. But kingdom plantae तो बहुत बड़ा है बाबा. अच्छा उसमें actually हम लोग एंजियोस्पर्म डिस्कस कर रहे हैं. Oh, out of 2,80,000, 250 था. We have reduced now. उसमें डाइकॉट है, still reduced. रोजेल्स ऑर्डर है, 18,000 हो गया. रोजेसी है, ओहो सो स्मॉल. उसमें से we are discussing genus Rosa, 500 species, but Rosa gallica is only one. Rosa gallica is only one. So have we now narrowed it down? Can you see the specificity decreasing now? Similarly for lion, kingdom Animalia, all animals are under kingdom Animalia. But I say phylum Chordata, oh, non-chordates are ruled out. But I say subphylum Vertebrata,
तो यूरोएनसेफेलोकॉरिडा is ruled out. I say class Mammalia, तो tetrapod, but no amphibia, no apes, no reptile, it is mammal. अच्छा, under that order is carnivora. अच्छा, all herbivores are ruled out now. उसमें family Felidae. Oh, cat family, dogs are ruled out. Panthera, cats are ruled out again. Species is Leo. So now you are ruling out tiger and leopard also. Getting it? So जैसे जैसे तुम kingdom से species की तरफ आ रहे हो, you are starting to become more specific in nature. And when you move from species to kingdom ऊपर, you start becoming more general in nature. More specificity starts decreasing. This point is clear, please, everybody too. So now we have 7 categories. Species to kingdom. We start from the lowermost category, species. Species may organisms with fundamental similarities is species. राइट देखो स्पीशीज को बेस्ट डिफाइन करने का तरीका क्या होता है राइट क्योंकि आगे इकोलॉजी भी अपने को आएगा तो इट इज बेटर दैट वी लर्न हाउ टू डिफाइन अ स्पीशीज राइट स्पीशीज को बेस्ट डिफाइन करने का तरीका क्या होता है सी आई हैव ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी आई वांट टू नो वेदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और नॉट I want to know whether they belong to same species or not. If A and B are able to reproduce amongst themselves, interbreed, then you say A and B are of the same species. So what is the quality? The ability, 2 organisms which are capable of interbreeding amongst themselves, they are called as belonging to one species. ठीक है? One should be able to distinguish one species from the other closely related species. Right? So is lion, tiger, leopard are closely related? Yes. So do we have certain morphological differences between them? मतलब मैं देख के ही बोल सकता हूं कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये लेपर्ड on the basis of the morphological differences. है कि नहीं? बट लेकिन मेरे सामने आप एक लेपर्ड रख दो, एक चीता रख दो, एक जैगुअर रख दो, हाँ थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगा बिकॉज दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड राइट ना. सामने एक जैकल रख दो, एक वुल्फ रख दो, ओ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा राइट. हम लोग को तो कार्टून फिल्म में लायन किंग में सब एक जैसे दिखते थे बराबर ना. हाँ वो वुल्फ था या जैकल था हमको मालूम ही नहीं पड़ा इनमें तो वुल्फ ही थे वो सब है कि नहीं. ओके सो one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. Consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, Panthera leo. All the 3 names, indica, tuberosum, they represent specific epithets. While the first word, Mangifera, Solanum, Panthera are genera, represents another higher level of taxon or category. Is genus. Right now, they represent genera. Genera is a higher level of category. So you should be very careful when using a term. So जब भी kingdom to species में कोई term use कर रहे हो, तो the term that you use is a term called as category. So kingdom is category, phylum is category, genus is category, class is category, order is category. I hope it is clear, please. Each genus may have one or more than one specific epithets. दिख रहा है यहाँ पे, right now? Is the genus Panthera having 3? At least in the table अपने को 3 दिख रहे हैं. Is Solanum having Solanum tuberosum is potato, Solanum nigrum is black nightshade, Solanum melongona is brinjal. Right now, have we studied by chance Solanum nigrum? पढ़ा हुआ है जिया? जिया? I don't think so. You don't think so? I think so. If you open a chapter on morphology and go to family Solanaceae, floral diagram, right now the diagram is of Solanum nigrum.
बराबर है? Yes, sir. इसका मतलब मॉर्फोलॉजी में ये पॉइंट मिस कर दिया हम लोग, राइट? So please understand why each and every example is brought in front of you. We don't miss even a single point from anywhere. ठीक है ना? Okay. ठीक है. Solanum melongona is brinjal or eggplant. Any other example from Solanaceae that you can give? Anybody? Tomato. Solanum lycopersicum. That is also Solanaceae, right? पूरे Solanaceae में कितने सारे examples अपने सामने हैं बाबा? फैमिली पढ़ा है कि नहीं फैमिली पार्ट में, मॉर्फोलॉजी में, राइट ना? सम एज मेडिसिनल प्लांट्स एंड सम एज वो बेलेडोना वगैरह आया था उसके अंदर, है क्या नहीं? तो ऑल दोस एग्जांपल्स एज पार्ट ऑफ सोलानेसी शुड बी नोन टू अस, प्लीज. ओके. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different but having morphological similarities. Example, Panthera includes tiger. Solanum includes species like nigrum and melangona. Human beings belong to sapiens, which is grouped under genus Homo. So we are written as Homo sapiens. Okay. So I hope the term species is understood properly. Genus uske upar wala. So group of species becomes genus now. A group of closely related species becomes genus, right? देखो potato, tomato, brinjal. Potato क्या है? Solanum tuberosum. Brinjal क्या है? Solanum melongona. Tomato क्या है? Solanum lycopersicum. All three different species, but all belong to genus Solanum. Lion, Panthera leo. Leopard, Panthera pardus. Tiger, Panthera tigris. All species are different, but same genera, Panthera. So if they belong to the same genera, Panthera, that means ये तीनों में कुछ तो कॉमन है जो उनको एक साथ लेके आता है. कुछ तो कॉमन रहेगा ना जो उनको साथ में लाता है, राइट? मुझे एक बात बताओ, I have a group of animals, let's say dogs, right now, or another group of animals, and I have a group of Panthera. Do both belong to kingdom Animalia? Yes. To call them as animals, I have a group of characters जो दोनों को साथ में लेके आता है. Now, the amount of characteristics which bring everything together to form animals, definitely थोड़े बहुत characteristics जो साथ में लेके आते हैं उन लोगों को. But when I say Panthera, the definite number of characteristics has to be more in comparison. ऐसे नहीं, जैसे है तुम species से ऊपर जाएंगे, the discussion becomes more general. The specificity decreases. So you are more specific when I say lion. A lion is different from a tiger, is different from a leopard, right? It's all species. But when I say they are belong to same genera, that means कुछ commonality है लोग के. Now this genus called as Panthera is different from another genus called as Felis, which includes cats, right? See what have I done for you all now. ये देखो, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, उनको मैंने ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए I made this small chart for you all, right? So is Leo, Tigris, Pardus all under Panthera genus? बराबर. Apart from, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, this genus Panthera differs from another genus Felis. ये अलग जीनस है, राइट ना? समझ में आ रहा है बराबर से? प्लीज सी, दिस इज द डाइसी पार्ट. A lot of examples have been covered in this particular area, and we have to be clear which belongs to which category. So when I say Felis, I have to be clear, Felis is a genus. उसमें एग्जाम्पल क्या दिखा मैंने? Domestica is a species, the house cat. Felis domestica.
The next category is family. Genera के ऊपर family. तो it is a group of related genera. It is a group of related genera, but the number of similarities will become less. तो ऊपर जा रहे हो ना अभी नीचे से. So जितनी पैंथेरा जेनेरा के अंदर सिमिलैरिटीज होगी उतनी उसकी फैमिलीज में सिमिलैरिटी नहीं होगी, फैमिलीज में कम सिमिलैरिटी होगी. अब यहां पर देखो, सॉरी पैंथेरा एंड फेलिस, they belong to family called Felidae. They belong to family called as Felidae. So Felidae के अंदर क्या लियो आएगा? Yes. Felidae के अंदर टाइग्रिस आएगा, Felidae के अंदर पार्डस आएगा, Felidae के अंदर ये सब कुछ, ये चारों एग्जाम्पल जो लिखे सब Felidae में आएंगे कि नहीं आएंगे? Isn't it? So can I say all these organisms, the lion, tiger, leopard, and the house cat, all are belonging to the cat family? Right? So जब वो एनिमल प्लैनेट के ऊपर बोलते हैं ना कैट फैमिली, तो हमको लगता है फैमिली अरे बहुत अच्छा साथ में एक साथ रहते. नो, द फैमिली विच दे आर यूजिंग इज द टर्म कैटेगरी. हाँ, इट इज नॉट लाइक हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली, नो, ऐसा नहीं. वो फैमिली टर्म जो यूज है ना, इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू दिस कैटेगरी, कैट फैमिली. कम टू प्लांट्स, राइट? वी नो सोलानम, हमें सारे एग्जाम्पल सोलानम के पढ़े, सोलानम नाइग्रम, सोलानम ट्यूबरोजियम, सोलानम मेलोंगा पढ़े बराबर. तो वैसे पेट्यूनिया भी एक जीनस है, दतुरा भी एक जीनस है, लेकिन ये तीनों जेनेरा एक ही फैमिली में है, सोलानेसी. क्या फैमिली सोलानेसी के फैमिली वाले पार्ट में पेट्यूनिया आया था अपने को? दतुरा वाज एन एग्जाम्पल. बराबर याद आ रहा है कि नहीं? Some of them are used as ornamentals like petunia, बराबर नहीं? So all of them belong to Solanaceae. Getting it, please? So ultimately, all these also belong to family Solanaceae. Okay, ये देखो, 3 different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in family Solanaceae. Panthera is put along with genus Felis in family Felidae. But if you observe features of cat and dog, you will find some similarities and some differences. तो अब उनको दो अलग अलग फैमिली में डाल दिया, Felidae and Canidae. राइट? अब ये कैनिडे के अंदर आएगा कैनिस में आया था एग्जाम्पल में, ना फैमिलियस का मतलब होता है अपना जो नॉर्मल डॉग होता है ना, वो फैमिलिस होता है. वुल्फ हो कैनिस ल्यूपस है, जैकल जो है कैनिस ऑरस है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग विच आर गिवन, otherwise you stick to only those examples which are there in the NCERT only. So familiaris is genus Canis. Genus Canis belongs to family Canidae. So are Canidae and Felidae families? Yes. तो Canidae और Felidae इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी ताकि वो एक फैमिली लेवल पे आ गए, लेकिन इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो ज्यादा होगी. राइट ना? पैंथेरा और फेलिस के बीच में सिमिलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी, फेलिडे और कैनिडे के बीच में सिमिलैरिटीज कम होगी. आई टोल्ड यू वी आर मूविंग फ्रॉम नीचे टू ऊपर. जैसे जैसे हम लोग किंगडम की तरफ जाएंगे, सिमिलैरिटीज विल गो ऑन डिक्रीजिंग, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर जनरल इन नेचर. Next is order. Right? So order are also identified on the basis of aggregates of characters. Order being a higher category is assembling of families. So families coming together will form order now.
देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस कैनिडे डॉग फैमिली, इस फेलिडे कैट फैमिली, लेकिन दोनों में कॉमनलिटी क्या है, दोनों कार्निवोर्स है. सो व्हाट इज द ऑर्डर हियर, कार्निवोरा, राइट. रिमेंबर मैमेलिया का एनिमल किंगडम डिस्कशन अपना लास्ट के 2 वाले स्लाइड्स किए थे हमने, किंगडम एनिमेलिया के अंदर. मैंने मैमेलिया के अंदर 6 ऑर्डर्स सिखाए थे आपको, ये 6 ऑर्डर्स सिखाए थे. याद है, चिरोप्टेरा बैट्स आता है, रोडेंशिया रैट्स आता है, रैट एंड माउस अलग अलग होता है, राइट. लैगोमोर्फा रैबिट और हेयर अलग अलग होता है, राइट ना. मैंने बोला था ये 4 मत करना, खाली 2 ही करना, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, क्योंकि ये चैप्टर में दोनों दिया हुआ है. सो कार्निवोरा ऑर्डर इंक्लूड्स 2 फैमिलीज, कैनिडे एंड फेलिडे, dog family and cat family. Felidae includes 2 genera, Panthera and Felis. Panthera has 3 genus, Felis has this genus, species. आ रहा है समझ में डिस्कशन. प्लांट्स में देखो, सोलानिस के साथ में कॉन्वोल्वुलेसी, अपार्ट फ्रॉम सोलानेसी देयर इज कॉन्वोल्वुलेसी, दोनों come into the same order, polymoniales. Polymoniales, order of polymoniales, written in the description. ये देखो, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलानेसी, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आर इंक्लूडिंग द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. ये सब डिस्कशन को आसान करने के लिए वो चार्ट बना दिया तुम्हारे. सो प्लीज प्रैक्टिस दैट चार्ट accordingly so that you know which category to place which organism. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. क्लास में अभी रिलेटेड ऑर्डर्स हो जाएगी अभी. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, डू वी हैव ऑर्डर प्राइमेटा, यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा, राइट. प्राइमेटा includes animals like monkey, gorilla, gibbon, is placed in class Mammalia. Is Primata placed in class Mammalia? Yes, Primata is placed in class Mammalia, right. Along with Carnivora, is Primata placed in class Mammalia along with Carnivora, right. So are carnivores mammals? Yes. Are primates mammals? Yes. So one small question, right ना, यहां पर जितने भी मैमल्स आएंगे वो सब प्राइमेट्स हो जाएंगे, तो क्या ये भी सारे मैमल्स है क्या नहीं? ये मैमल है कि नहीं? बैट इज अ फ्लाइंग मैमल ना भैया, माउस इज मैमल, कार्निवोर्स ये सब मैमल्स है ना. तो ये सारे प्राइमेट्स को छोड़ के विल बी नॉन प्राइमेट मैमल्स. समझ में आया, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स. नाउ menstrual cycle is a feature of primate mammals, ईस्टर cycle is a feature of non primates. याद है हीट पीरियड सर ने पढ़ाया था, मोनोईस्ट्रस, डाईस्ट्रस, अलग अलग हीट साइकिल्स आते हैं, ब्रीडिंग साइकिल्स आती है. ओके, सो प्राइमेट अलग, सो ये सारे आ जाएंगे तुम्हारे नॉन प्राइमेट्स में. क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो. सो वी नो क्लास मेमेलिया हैज प्राइमेट और कार्निवोरा के अलावा ये बहुत सारे ऑर्डर्स अलग अलग है अपने पास. एग्जाम्पल भी प्रेजेंट है. उसके ऊपर आएगा फाइलम, उसके ऊपर आएगा किंगडम, राइट. सो दैट इज हाउ यू गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. स्पीशीज द स्मॉलेस्ट यूनिट, किंगडम इज द हाईएस्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है. सो ये 2 चार्ट जो है ना वो बहुत संभाल के करना और उसको प्रैक्टिस करना. जैसे मैंने बनाया है वैसे उसको लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि यू डोंट फॉरगेट एनी ऑफ द एग्जांपल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी. सो इफ यू आर आस्क्ड सोलैनम belongs to which order, you should know that it is polymoniales. by Solanaceae के साथ फैमिली में कौन आता है? अच्छा, Convolvulaceae आता है. Polymoniales include which families? These families. Solanaceae includes which genera? Solanum includes which species? Right? This can be asked with respect to their common names and biological names. दोनों क्योंकि दोनों पढ़ चुके आप लोग. उसके बाद ये चार्ट दिया हुआ है तुम लोग को, राइट. एनसीईआरटी का चार्ट है, मिला.
राइट, इसको 2-3 स्टार मार्क कर दो उसको वहां पे, राइट। नाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स, हम लोग दोनों को ले लेते हैं अलग अलग। कैन यू सी, मैन हाउस फ्लाई 2 एनिमल्स है, एंड मैंगो एंड वीट 2 प्लांट्स है, ठीक है। सो मैन, फाइलम कॉर्डेटा, राइट, राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, आ गया ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडे, जीनस होमोस, द नेम इज होमो सेपियंस, राइट। यहां पर जो है ना DAE को अंडरलाइन करो, DAE अलग कलर से है एकदम, ठीक है। कम टू हाउस फ्लाई ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड फीट है इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। और ऑब्वियसली फाइलम विल हैव क्लास ना, राइट, रिमेंबर क्लास इंसेक्टा में गिवन यू सिल्वरफिश आल्सो, याद है कि नहीं? ओके, अब ये आर्थ्रोपोडा पढ़ा है हम लोग ने एनिमलिया में, रिमेंबर आर्थ्रोपोडा का फर्स्ट पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, 2/3 ऑफ द एनिमल्स किंगडम बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट क्लास, क्लास इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास है। ऑर्डर इज डिप्टेरा, फैमिली इज म्यूसिडे, जीनस इज मस्का, म्यूस्का, और नेम इज म्यूस्का डोमेस्टिका। आई टेल यू फेलिस डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका एग्जांपल दिया था, राइट। स्पीशीज नेम सेम हो सकता है। यहां पर DAE को अंडरलाइन करो, वही कलर से जो ऊपर किया था। तो अपना कंक्लूजन क्या आ गया कि एनिमल्स में अगर फैमिली का नाम पहचानना है तो लास्ट में DAE आएगा, सफिक्स उसका DAE आएगा, राइट। चेक करो, ये देखो, कैनेडे फैमिली, फेलिडे फैमिली, DAE है कि नहीं यहाँ पर फैमिली के अंदर? सो कितने एग्जांपल्स तेरे पास, कैनेडे फैमिली है, फेलिडे है, एंड यू हैव गॉट होमोनिडे एंड म्यूसिडे. So what is the commonality? The last suffix. So if the last suffix is given apart from these 4 which I have given you all, will you be able to identify them that it is an animal family? Yes, from the suffix you can identify, right? Give me a minute, just to charge. From the suffix DAE you can identify that this is a animal ka family. Okay, coming to mango and wheat now. फाइलम और डिवीजन इज, यहाँ पे प्लांट्स में डिवीजन हो जाएगा, फाइलम नहीं होगा अभी। डिवीजन एंजियोस्पर्म, दोनों एंजियोस्पर्म है। क्लास एक डाइकॉट है, एक मोनोकॉट है। ऑर्डर इज सैपेंडिल्स पोएल्स, फैमिली इज एनाकार्डियेसी पोएसी, मैंगिफेरा इंडिका, ट्राइटिकम, स्टार्टिंग में दिया था ट्राइटिकम एस्टिगम, वीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइटिकम एस्टिवम। ओके, अब यहाँ पे देखो ALES, ALES दिख रहा है, ALES। ये पीछे वाले ऑर्डर में देखो, पॉलीमोनियल्स, ALES दिख रहा है अपने को। तो इसका मतलब ALES सफिक्स में आता है तो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्लांट ऑर्डर। ठीक है ना। फैमिली का तो अपने को सफिक्स मालूम है ना, सी है, वी हैव डन ना, लिलिएसी, सोलानेसी, राइट ना, फबेसी, ओके, एनाकार्डियेसी, पोएसी, एस्टरेसी, ब्रासिकेसी, so many plant families we have done. So please underline CEAE, ठीक है ना। सो ये वाले जो 2 बॉक्स हैं, फैमिली ऑर्डर वाले बॉक्स, दिस इज द चैलेंज। ये सब तो बहुत इजी है, यहां से लर्न करना और यहां से, राइट। दिस एंटायर बॉक्स कैन कम एज 1 क्वेश्चन, this entire diagram can come as 1 question. Any of them can be removed and labeled as ABCD, and they can give you 4 jumbled up options. Recognize 4 ABCD correctly. ठीक है, ओके।
So this is a small slide from my side for you all. I've just summarized everything. Suffix अगर phyta होता है, so it is division. Remember, thallophyta, bryophyta, right? Na pteridophyta, spermatophyta. If it is physi, chlorophysi, phaeophysi, rhodophysi, or opsida, bryopsida, hepatogopsida, anthoceratopsida, psilopsida, right? Sphenopsida. पढ़ा है ना pteridophyta में? अगर ये suffix आया तो it is class. सारे प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था? Algae is divided into 3 classes. Bryophytes is divided into 3 classes. Pteridophyta is into 4 classes. Suffix ACAE, तो ये जितने भी 4 है वो सब प्लांट्स के लिए. एनिमल्स में अपने को एक ही कॉमन मिला, DAE, फैमिली ऑर्डर के लिए, फैमिली के लिए. ठीक है, क्लियर प्लीज. The fourth part is dealing with taxonomical aids, some some aids through which taxonomy is studied. उसमें अगर if you see the NCERT ना, they have described a herbarium, a botanical garden, a museum, zoological park, and there is one concept called as key, right? Key will require a small bit of explanation. My next lecture is going to be offline, obviously. So I'll be talking about the key in the lecture. But बाकी जितने taxonomical aids है ना, वो पढ़ लेना, right? If there is any doubt, I will solve the doubt in the class. ठीक है ना? So for all practical purposes, we have finished with the chapter, right? We are done with the chapter, right? The 4 parts of the chapter. AIDS वाला part जो है ना, taxonomical aids वाला, please पढ़ के आना next time after the vacation when you rejoin. ठीक है? Right? We have 27 people and half of them have shut down their cameras. I don't know why. So many people are having problems with their cameras, or they are just dying to leave the class. I don't know why. Okay. Anyways, the chapter is finished.